Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amar. I am representing Media Group and Civil Society. My group member name is Atif, Ma'am Farad and Dr. Farhan. तो मैं सबसे पहले आपको इसकी चैलेंज बताऊंगा जो कि चैलेंज है चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग की। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो गुर्बत का है। गुर्बत में जो बच्चे हैं काम करने जाते हैं किसी भी शॉप पे, मैकेनिक पे, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं सर 100 रुपया मिलेगा हमें काम का, शाम को इसकी सब्जी लेकर जाएंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर में सब्जी चूल्हा कैसे जलेगा। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा पॉवर्टी का है। अगर जब दूसरी बात करते हैं एजुकेशन की, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या कुछ है इस तरह का वो स्कॉलरशिप गरीब बच्चों के लिए वो नहीं कर रही। वो कहता है अगर हम स्कूल में जाएं तो हमें हमारे कमाने का कौन जरिया होगा। तो हम एल्डर हैं, इवन के 7 साल का बच्चा भी आप देखते हैं बाइक की शॉप पर दूसरी शॉप पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम आते हैं भट्ठा जो ईंटें बनाता है, फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू है। अगर कोई मीडिया का पर्सन भी रिपोर्टिंग करना चाहे कुछ है, उन्हें अपने इस तरह के बंदे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ रखे होते हैं, वो अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। मीडिया चैलेंज भी हैं। और थर्ड वन ये है, मैं बताऊँगा डाटा, एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा हमारे पास कि कितने लोग हैं काम कर रहे हैं भट्ठों पर और क्या है, क्योंकि अंदर तक रसाई ही नहीं होती हमारे। जब हमारे रिपोर्टर या कोई जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूँ नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगर कोई हमारे चाइल्ड लेबर के अलावा ट्रैफिकिंग या कुछ है तो इफेक्टेड विक्टिमाइज होता है पर्सन, उनके लिए जब वो वापस आए उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर पाकिस्तान में इतने नहीं हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ की हम बात करते हैं। ये चैलेंज की बात कर रहा था। और लास्ट वन मैं स्टेप करूँगा, फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। जितने भी आप देखते हैं सोशल मीडिया का हर बच्चा है या कोई भी है उसके हाथ में मोबाइल है, वो अपने आप को मीडिया पर्सन शो करता है। हालांकि ये एक चैलेंज है, क्वालिफाइड ट्रेंड होने या डिग्री होल्डर होने चाहिए और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप ये तूफान आ चुका है सोशल मीडिया का, हर लोग इसको अपने आप को मीडिया पर्सन शो करते हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस चैलेंज से निपटना चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग करवाएं, बाकायदा ट्रेनिंग सेशन हो, आपने क्या न्यूज़ अपलोड करनी है क्या नहीं करनी। बाज़ार के आप पाबंदियाँ लगा दें यूट्यूब्स को और दूसरी चीज़ों पर, जैसे पाकिस्तान में होता रहता है मोस्टली, ये प्रॉब्लम है। और इसके सोल्यूशन को, रिकमेंडेशंस को मैं अपने नेक्स्ट ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा, वो आएंगे रिप्रेजेंट करेंगे। Thank you very much. First step to address a problem is to recognize that problem. We people sitting here think that it is a well-established problem and the whole nation recognizes it, but unfortunately it is not the case. So first and foremost, we need to make it recognized and make it part of the dominant narrative in the public consciousness through advocacy and constant dialogue. And this dialogue will be incomplete and inconclusive if the central character and stakeholder of this problem is not made part of it, and they are children. They should be made part of this national debate and dialogue, because from them, from children, we can hear many innovative solutions. We see that they are far ahead of our generation in technology, as well as in social issues. They too have innovative ideas and we can learn from them. So in these conferences and dialogues, we should also invite them. Third, our group's third recommendation is having and establishing strong coordination and collaboration between the government ministries and all 4 provinces. And our group has identified 2 institutions for this collaboration and coordination. One is Council of Common Interest and the other is Ministry of Interprovincial Coordination. In order to check child trafficking between the provinces, inter-provinces child trafficking and bonded labor, and child trafficking beyond the international borders, we should have a check, and for that check, proper check, and to get accurate data, we need very strong coordination between
all 4 provinces and ministries. These are very efficient forums, CCI and IPC, but unfortunately not being used properly. So our advocacy should also demand that these institutions be strengthened and made accountable. The province of Balochistan has been identified as a hub, hotspot, and a transit for child trafficking and bonded labor. Children from all provinces are being trafficked there. Children from Punjab and Sindh can be seen begging there. Children from Pashtun areas, especially Shangla district, they are employed there in mining business, which is very dangerous for even for adults, let alone kids. So to address this issue, once again, we need strong collaboration and coordination between the provinces, and to control the child trafficking from international borders. We need collaboration and coordination between the neighboring countries of Pakistan, Iran, Afghanistan, and for that UNHCR and UNICEF can act as mediators. UNICEF did that so well in 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐨𝐮𝐭 cases. So that success story should be repeated to curb child trafficking as well. Our group also recommended that there is a serious lack of data and accurate statistics with regards to child trafficking. So there is a need to conduct a comprehensive community-based research to get actionable data from all 4 provinces. And our next recommendation is a sensitive one about the madaris. Madaris are no-go areas for reasons we all know very well. Nobody is allowed to go there and see the situation. Even police can't go there. Our child protection officers, many of whom are present here, they have reported that even they have been denied the access to madaris. So we don't know the actual situation there. So our group has recommended that DCCs, district coordination committees, should be allowed to visit madaris at least once a month. This is the most tricky recommendation, but I think report says that around 2 million children are enrolled in madaris in Pakistan. So if we will neglect this huge number of children, then no research and no study will give us accurate data. And last but not the least, our group 4 has recommended that subjects related to child rights and child protection should be made part of curriculum at different tiers. Children should be taught their rights from the very beginning to the graduate classes. For the way forward to implement these recommendations, I would request my group member to please come forward and have few words. Thank you. ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं कैमल जोकी का आपने जिक्र किया, ना कोई केस रिपोर्ट हुआ है, ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है. काइंडली अगर ऐसा है तो हमें अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जो कैमल जोकी का है. बेसिकली ये जो मुख्तलिफ जो फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें कैमल जोकी का फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग जिसमें चाइल्ड को जो है वो अब्यूज किया जाता है. तो अब डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो इसलिए इसको जो है ऑन द रिकॉर्ड या जो टेबल पे रखना चाहिए. इसके केसेस नहीं, चूँकि हम हमारा जो डोमिनेंट फोकस था वो रिकमेंडेशंस पे था कि हम किस तरह से इसको एड्रेस कर सकते हैं. ये नो डाउट कि ये एड्रेस हो चुका है, लेकिन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. अब एड्रेस हो चुका है, हो सकता है ये फिर रीमर्ज हो दोबारा से, तो कम से कम हमारी जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में पड़ा है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग में नहीं आती, वो किसी तरह से फॉल करती हैं, तो काइंडली हमें अप्रेज कर दीजिए. वो आप अप्रेज करिए ना हमें. हमारे पास कोई सोर्स ही इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है पता लगाने का कि मदारस में हो क्या रहा है. That's why we have recommended and suggested that at least DCC should be allowed to visit each
मदारिस एटलीस्ट वंस अ मंथ, ताकि हमें वहाँ हकायक का पता लग सके. वी आर इन द टोटल ब्लैंक. ठीक हो गया. मतलब इनका ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू इनका ये है कि उस पर कोई रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए कि कोई ऐसे लोग भी, कोई बच्चे ऐसे तो नहीं है वहां पे जो ट्रैफिक वहां पे भी हो रहे हो. जस्ट अ सजेशन ना, तो सजेशन देना excuse तो me. उनका राइट. एक्चुअली Sir. इसको यानी पहले डिस्कशन में कहा गया था कि देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु हैव बीन यूज्ड फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज. So it has been suspected that these children could be are अच्छा, वो जो brainwashing. चाइल्ड सोल्जर हाँ. वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो लिंक करेगा किसी मदारिस के साथ या कोई इस तरह की चीजें, कि वो एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स भी होते हैं जो इस तरह के बच्चों को ब्रेन वॉशिंग के जरिए जो है वो फर्दर यूज कर रहे होते हैं. सर शायद साहब. क्या मीडिया कोई रोल अदा कर सकता है आइडेंटिफाई करने में इन कल्प्रिट्स को, जो दोज हु आर इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग, दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट? उसमें मीडिया का रोल मेरे ख्याल में ये तो डिग आउट करते हैं. दे डू हैव कैमराज एवरी मिनट्स विद देम, सो दे कैन कैच, दे कैन टेक द पिक्चर्स और द वीडियो बनाएं और फिर जाके वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से शेयर करें कि दिस ग्रुप इज वर्किंग ऑन चौरंगी 1 शॉपिंग सेंटर नंबर 5 और ये वो, तो फिर ताकि थोड़ा सा बोले. क्योंकि इशू इस मामले में क्या है कि वी डू नॉट हैव द कंप्लेनेंट, बिकॉज द पर्सन हु इज एग्रीव्ड, he is not making complaint, he is living in a compelling circumstances, because the culprit is providing roti kapda aur makan, so they are more sincere with that culprit rather के स्टेट से वो किसी तरीके से होंगे. तो मीडिया का रोल कुछ हो. हमें सबसे बड़ा मसला ये कि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा आदमी. थैंक यू वेरी मच. मीडिया का जो किरदार है वो बिलाशुबा आप देख रहे हैं कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, लेकिन ऐसा जहाँ तक रसाई की बात है वहाँ मीडिया की भी वहाँ रसाई नहीं है. जैसे कि कच्चे का इलाका है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जहाँ पे हो रही है, वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो वहाँ पे तावन करने की ज़रूरत है. और जहाँ पे लैप्सेस आ रहे हैं वो मीडिया जो है वो शो तो करता है, लेकिन एक जैसे कि मैं स्टेट न्यूज़ एजेंसी में हूँ तो मैं वो एग्जैक्ट फाइट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बरकरार रखना चाहते हैं. इसलिए जो स्टेट मीडिया है वो आपको कभी भी एग्जैक्ट फिगर हमें जो है वो अलाउ नहीं होता कि आप इस तरीके से उनको हाईलाइट करें कि एक पाकिस्तान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो पाकिस्तान का इमेज है वो ख़राब हो. दूसरी बात ये है कि जो मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए उसमें मीडिया अवेयरनेस और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना रोल प्ले कर भी रहा है और करता भी रहेगा, लेकिन उसमें इदारों की आपस में इंट्रा प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन है वो लेक होने की वजह से, और 18 अमेंडमेंट आफ्टर 18 अमेंडमेंट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है कि लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मीडिया एज सच उस पर लागू नहीं कर सकता, वो अब उसको हाईलाइट तो कर सकते हैं. थैंक यू. ठीक हो गया जी. थैंक यू वेरी मच टू द ग्रुप जी. और बड़ी वैलिड सजेशंस आई तमाम ग्रुप्स की तरफ से. और ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद जिस पे पार्टिसिपेंट्स एग्री नहीं करते या हम नहीं करते, बट दीज आर नॉट द फाइनल सजेशंस. इनको हमने फर्दर रिव्यू करके एक कंक्लूजन की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे और एक रिपोर्ट की शक्ल में जो है वो शेयर भी करेंगे.